स्टार्ट हो गया? जी है। All right. So we were talking about the difference between pronunciation and accent. So I told you about the accent. कि accent हर 90 kilometers बाद change होता है. And pronunciation क्या होती है? Is the sound of the word. If I call you by your name is Hamza, and how I call Hamza, it's is the name. If I called in English, Urdu, the pronunciation will be the same, right? So there are the many words जो कि कल हमने थोड़े से डिस्कस भी किए थे in your first trial class. Is about the academic, it's a nash, it's a kernel, it's a knife. So it's all about the pronunciation of the word. So now we are talking about some of the time हम इंग्लिश तो बोल रहे होते हैं लेकिन हम मिस्टेक्स करते हैं, और अगर वो मिस्टेक्स हम इंटरव्यू में कर रहे होते हैं तो वो बहुत वियर्ड लगता है, बिकॉज some of the people is they are around us वो इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होती है, जैसे कि आपको मैंने इंपॉर्टेंस लास्ट टाइम भी बताई थी. सो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, और इससे जो है वो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है, एंड यू विल लेट यू नो अबाउट द राइट प्रोनाउंसिएशन, एंड दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी प्रोडक्टिव. So let's talk about it. Before gonna be begin, there are five vowels. As you know that in alphabets में हमारे पास 26 letters होते हैं, right? A से Z तक 26 होते हैं, और उन 26 letters में 5 vowels होते हैं. A, E, I, O, U, and they are that letters जिनके बगैर इंग्लिश का कोई प्रोडक्टिव वर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं होता है. अब बट प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट द वाई. आपने वाई को नहीं भूलना. बट वाई इतना खास क्यों है? बिकॉज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे अल्फाबेट में. वाई में दोनों क्वालिटीज है, वाई वोबल भी है, वाई कॉन्सोनेंट भी है. एंड नाउ इज द क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है कि आपके 26 लेटर्स में जो एक 21 लेटर्स जो है वो बच जाते हैं वोवल को निकाल के, वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सिंपल वर्ड्स में कि वो लेटर्स जो वोवल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन वाई इतना इंपॉर्टेंट है, ये वोवल भी है ये कॉन्सोनेंट भी है, मीन्स कि इसको हम डिफरेंट वे से पढ़ेंगे. अगर वाई जो है वो स्टार्ट में आ रहा है वर्ड के तब इसकी साउंड डिफरेंट हो जाएगी, अगर मिडल में आएगा तब डिफरेंट हो जाएगी, जब लास्ट में आएगा तब डिफरेंट हो जाएगी. तो इसके अंदर दोनों क्वालिटीज है. बट इतने सारे साउंड्स हैं, 26 लेटर्स हैं, हर साउंड की हर लेटर की अपनी साउंड है, उन सबको याद करना डिफरेंट है, डिफिकल्ट है. बट वोवल साउंड आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. हमने वोवल साउंड्स को दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है जो कि इजी रहेगा. एक होते हैं शॉर्ट साउंड्स, एक होते हैं लॉन्ग साउंड. इफ यहाँ तक क्लियर है? जी मैम, आपने मैम मेरा थोड़ा गला खराब है तो मेरे बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो अगर मैं माइक बंद कर दूं तो आप समझिएगा मुझे खांसी आ रही है। तो मैम ओके, आप आपने कहा कि यू कैन तो आंसर इन चैट फाइव, बॉक्स. जी जी मैम आपने बताया 5 आवर्स हैं, तो इसमें से जो बाकी जितने वर्ड्स हैं मतलब जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, और फाइव बिल्कुल. इस तरह है कि कभी ट्रेस के आवर्स होता है और कभी कॉन्सोनेंट्स होता Absolutely. So first of all, rule है हमारे पास, short words have always short sound. Means के हमेशा short words की जो है ना वो short sound होती है. कैसे होती है? जैसे कि आप ये तो हमें पता है कि जितना short word होगा उसकी sound भी short होगी, लेकिन यहाँ पर दो conditions हैं कि word के अंदर वन syllable होना चाहिए और 3 or 4 letters होने चाहिए, तब वो short word बनता है. दो conditions होनी चाहिए, 3 or 4 letters, just 3 or 4 letters और वन syllable. अब 3 or 4 letters का तो पता है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, कैट, पेन, टेन, ये सारे इनमें शॉर्ट वर्ड हैं और 3 या 4 लेटर हैं बस. अब बात होती है है। सेलेबल क्या सॉरी, होता है. चलो यही पूछना या है। सेलेबल होता है, इट्स ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ आवर फेस. आपको पता है जब हम वो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं बच्चे को हम पढ़ाते हैं उसके स्टार्टिंग से अबाउट द नूरानी कायदा, राइट? अब वहां पर हम उसको तलफ़ुज़ पढ़ाते हैं कि आप जब आपने हा पढ़ना है या आपने आइन पढ़ना है तो वो आपके हलक की कौन सी जगह से आवाज निकलती है जब बच्चा तजवीज से पढ़ता है. मतलब स्टार्टिंग में जब आप उसे पढ़ना सिखा रहे हैं, आप अरेबिक सिखा रहे हैं, तो आप उसको जो है वो एक हरूफे मुफरीदात अरबी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं हरूफ तहजी, आप वो सिखाते हैं उसको, राइट? अब यहाँ पे भी हम जब इंग्लिश सीख रहे हैं, स्टार्टिंग इसका मेन पॉइंट होता है आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए. इवन आपको देख के तो पढ़नी आनी चाहिए रीडिंग. तो वो क्या होती है? आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है. जब जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ते हैं,
आपके फेस की जो चिन है वो मूव करती है। ठीक है, जब आप, क्योंकि आप मुंह से बोलते हैं तो आपकी फेस की जो चिन है वो मूव करती है। जितनी बार आपकी फेस की चिन नीचे डाउन होती है वो सिलेबल काउंट होता है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कैट, मेरी जो चिन है वन टाइम डाउन हुई है। पेन, पिन, पॉट, रन, बेंड, इससे पता चला कि ये सारे वर्ड्स के अंदर ओनली वन सिलेबल है। और मैंने इसको पढ़ के भी देखा कि इसमें वन सिलेबल है और थ्री और फोर लेटर्स हैं। और ये दोनों कंडीशंस इट शुड बी फुलफिल इन ऑल अबाउट द शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, जिसमें थ्री और फोर लेटर्स होने चाहिए और वन सिलेबल होना चाहिए। ये आपका शॉर्ट वर्ड होता है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ के भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और आप चेक करें कि वाकई इसमें वन सिलेबल है। जी, कैट, पेन, पिन, पोट, रन, पेंट, मतलब के साउंड एक ही आ रही है, इसका मतलब है हम्म, कि ये सिलेबल, मतलब बिल्कुल। एक ही गो में जा रही है, एक ही गो में, मतलब पेन, कैट, इस तरह इसको ही कहते हैं एब्सोल्युटली, flow। एब्सोल्युटली, ये आपके शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल नंबर टू। अब रूल नंबर टू में हम लॉन्ग वर्ड की बात करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखें, इसमें ओनली फोर वर्ड हैं। MEAT, मीट। हालांकि ये शॉर्ट वर्ड है, इसके अंदर फोर वर्ड लेटर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको मीट पढ़ रही हूँ, मतलब लॉन्ग करके पढ़ रही हूँ। अब इसकी क्या रीजन है? क्योंकि इसके अंदर टू सिलेबल हैं। मेरी जो चिन है वो वन टाइम सिलेबल जितना डाउन रहता है उससे ज्यादा एक्सीड कर गई है। तो इट्स मीन वो टू सिलेबल काउंट होगा, या और ज्यादा एक्सीड कर जाएगी तो उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। तो ये शॉर्ट वर्ड तो नहीं है। ठीक है, शॉर्ट वर्ड में वन सिलेबल होगा या तीन या चार लेटर होंगे। यहाँ पर तो जी दो सिलेबल हैं और चार लेटर हैं, इट्स मीन ये लॉन्ग वर्ड है। अब पढ़ते हैं कि ये रूल क्या कहता है। ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है टू वोवल साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग साउंड। अगर दो वोवल बिल्कुल साइड बाय साइड आ जाते हैं, साइड बाय साइड का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ आ जाते हैं, तो वो आपके एक लॉन्ग साउंड जनरेट करते हैं। अब when there are two different vowels beside each other and they generally make the long sound of the long sound of the first vowel, I mean to say कि अगर यहाँ पर मीच में मुझे बताएं कौन कौन से वॉवल हैं। ई ए। ई एंड ए, एब्सोल्युटली। अब ई में, ई एंड ए में फर्स्ट वॉवल ई है, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वॉवल है ई की वजह से साउंड लॉन्ग हो जाती है। जैसे कि मैं इसको पढ़ती हूँ मीट। अब मेरे पूरे साउंड में जो ज्यादा साउंड थी ना वो ई की थी। ए को बस मैंने हल्का सा टच लिया, वो भी लास्ट में। ठीक है, तो ये मीट बना, इसको मैं मेट तो नहीं पढ़ सकती ना, इसको मुझे लॉन्ग ही पढ़ना पड़ेगा। मीट पढ़ते हैं, इसकी साउंड एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन ही मीट है। तो इसमें जो जिसने साउंड लॉन्ग की है वो फर्स्ट वॉवल है और जी, वो ई है। इसी तरह से सेकंड वर्ड है, इसमें आपके दो वॉवल आ रहे हैं ए एंड आई। तो फर्स्ट साउंड किसकी लॉन्ग होगी? ए लॉन्ग होगा क्योंकि ए वोवल एब्सोल्युटली, फर्स्ट आ रहा होगा। ए लो, ए वोवल फर्स्ट है तो इसको आप पढ़ेंगे प्लेन। और ऐसे कि अगर आपको जैसे फर्स्ट आपको वर्ड था प्लेन और आपको नहीं पढ़ना आता इसको कैसे पढ़ना है, तो आपने देखना है अच्छा इसमें दो वोवल है, फर्स्ट वोवल को लॉन्ग कर देता हूँ, आपकी साउंड बिल्कुल करेक्ट आएगी। इसी तरह से गॉट है, गॉट में ओ एंड ए लेटर्स है, तो आपने ओ को ज्यादा साउंड देनी है। इट्स अबाउट द गोट, राइट? इट्स अबाउट द मीट दैट is about, we can call in Urdu is about, and in plain is about the thing is straight, and the goat is God. Okay, so now is the thing that are very very easy. It's about the rule number three. Rule number three is about the pronounce double consonant as a single letter. For example, यहाँ पर एक word है fuse, FUZZ या double Z, fuse। अगर यहाँ पे सिंगल Z भी होता तब भी मैंने इसको fuse पढ़ना था, क्योंकि इंग्लिश कहती है कि अगर किसी वर्ड में डबल कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं तो उसकी साउंड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे डबल आ जाए चाहे सिंगल आ जाए, साउंड को वैसे ही पढ़ें जैसे सिंगल को पढ़ते हैं। तो देर इज सेम लेटर होनी चाहिए। नो सेपरेट, या सेम साउंड। तो इट्स अबाउट दिस। अगर इसमें फ्यूज में जी डबल जेड की बजाय सिंगल जेड है तब भी फ्यूज है। ब्लिस जी में डबल एस के बजाय सिंगल एस है तब भी ब्लिस है। फ्यूज इट्स मीन द, कुछ चीज में अगर हमें साफ नहीं नजर आ रहा है, इट्स अबाउट द थिंग इज धुंधली नजर आती है तो फ्यूज होता है। ब्लिस होता है, जी इट्स अबाउट द नेमत, एंड नेमत की प्लूरल जो होता है नेमतों, इट्स अबाउट द bliss and occur वाक्य होना। if I say that your trial class uh, was occur at 13 June 2026, ठीक है, तो वो वाक्य हुई थी टू डेज बिफोर, राइट? तो अगर यहाँ पे डबल सी के बजाय सिंगल सी भी आएगा तब भी मैं इसको अकर पढ़ूंगी। एंड फ्लफ में अगर डबल एफ के बजाय सिंगल एफ आएगा तब भी ये फ्लफ ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता है अगर यहाँ पर जो है वो डबल कॉन्सोनेंट भी आ जाए तो। ठीक है, जी जी, समझ गई। ऑल राइट।
सो इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है, जी बहुत जी इजी। जी 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 जी। ऑल राइट, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट। Rule number 4 is about key vowels short before double consonant. सो यहाँ पर आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कि अगर वॉवल जो है वो आगे और उसके बाद डबल कॉन्सोनेंट्स आए हैं, तो हमेशा उसकी जो वॉवल साउंड है वो शॉर्ट रहेगी, क्योंकि वॉवल के बाद ना हमेशा से प्रिविलेज होती है कि मैं वॉवल हूँ, तो हमेशा उसको लॉन्ग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वॉवल के बाद या फिर डबल कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आ जाए, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर डिनर में आई पहले है और डबल कॉन्सोनेंट बाद में, या आप ऐसे कह लें कि वॉवल के बाद डबल कॉन्सोनेंट आ जाए या फिर डबल कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आ जाए, तो वॉवल की साउंड शॉर्ट हो जाती है, मतलब उसकी थोड़ी सी प्रिविलेज कम हो जाती है। कैसे? अब इसको देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका डिनर, DINNER। हालांकि वोवल को हमेशा लॉन्ग पढ़ते हैं, लेकिन आई को उसने कितना शॉर्ट कर दिया ना। डिनर जी एन की साउंड ज्यादा आ रही है क्योंकि डबल एन है। डबल एन ने उसकी थोड़ी सी प्रिविलेज थोड़ी सी लो कर दी और आई की साउंड शॉर्ट हो गई। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ DINER, इसको पढ़ते हैं डाइनर। इसको डाइनर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वोवल के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो वोवल तो हमेशा पढ़ा ही लॉन्ग जाता है, तो इसलिए मैंने इसको डाइनर पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डबल कॉन्सोनेंट की प्रिविलेज है जब वहां पर जो है वो आई आ जाए। अगर वहां पर कोई वोवल नहीं है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपने फ्यूज वगैरह पढ़ा, देखें आपने पढ़ा कि फ्यूज फ्यूज में भी डबल जेड के बाद मतलब यू था, तो यू की साउंड कितनी कम आई है, फ्यूज यू हल्का सा टच हुआ। अगर यहाँ पे डबल एस में भी आई था, तो यहाँ पर ब्लिस आई बहुत शॉर्ट है। अगर यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट से पहले ओ है और ओ भी वॉवल है, लेकिन इसके साउंड पे डिफरेंस तब पड़ेगा जब वॉवल साउंड जो है वो यू, आई मीन टू से जब भी वॉवल होगा तब। ठीक है, जब भी वॉवल आ जाए आपने साउंड, वॉवल की साउंड को शॉर्ट करना है, जब कॉन्सोनेंट हो वो भी डबल। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है डाइनर, डिफर, शटर। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस करना, डाइनर इट्स मीन डाइनर सच है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। एंड डिनर होता है इवन मील ऑफ नाइट। एंड द शटर इज अबाउट टू क्लोज करना। अक्सर शॉप्स के बाहर शटर होते हैं, शॉपकीपर ऑन करता है, ऑफ करता है, क्लोज एंड ओपन, राइट? जी जी। वही शटर है ये। और ये यहाँ पे भी यू की साउंड जो है वो शॉर्ट है। ठीक है। मैम इसमें रूल ये है मैम, सॉरी मैम आपका। मैम हम्म इसमें रूल ये है कि पहले भी वावल्स आना चाहिए और डबल कॉन्सोनेंट के बाद भी वावल आना चाहिए। फिर हम वावल को जो है तो हम मतलब शॉर्ट पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट को के ऊपर थोड़ा सा मतलब छोड़ देंगे। ऐसे ही, हम्म। ऐसे ही मैंने कहा। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ठीक है। जैसे डिनर, डिनर मतलब जो कॉन्सोनेंट है उस ये रूल ऐसे ही कि अगर दोनों साइडों पे वावल है और उसका हम्म, वो है। और बिल्कुल डिनर, ऐसे। डिनर मतलब जो आपने नीचे लिखा डिनर, ये इसको मतलब दाइन और पढ़ेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट मतलब अगर कॉन्सोनेंट से नहीं, पहले आए तो। या एब्सोल्युटली, ठीक है। सो ये फेमिलियर ही है, रूल नंबर 3 और 4 आपस में फेमिलियर है। अब रूल नंबर 5 इज वेरी इजी, मतलब रूल्स पे सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट है। अब हम 6 तक कवर करेंगे बहुत, ताकि आपको याद रहे, और बाकी हम कल कर लेंगे। जी रूल 5 जी कह जी। रहे हैं कि मैम अगर हम, वर्ड, सॉरी मैम आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैम, हम ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब पढ़ाएंगे क्योंकि वो मैंने टॉकिंग हैबिट में पढ़ा था ना, अगर हम एकदम बहुत ज्यादा कर लें तो फिर वो 2-3 दिन नो नो, बाद भी हम। आपको जितना वो सही से याद रहेगा ना, जो जितना आप डेली कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बहुत ज्यादा स्टफ दे दिया और वो आपसे कवर नहीं हुआ, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप जी डेली कर रहे हैं ना, तब उसका बेनिफिट है हमें। ठीक है, तो हम जी जी उतना ही करेंगे। अब इस यहाँ जी। तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो आपको? इजी है, ये तो बहुत तो बहुत बहुत इजी। इजी है ना, ये तो बहुत जी इजी है, ये बहुत बेसिक है। और अगर मैं आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़ाए बगैर नेक्स्ट ले जाऊं और ग्रामर वगैरह में वहां पे कोई मिस्टेक हो जाए, तो ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने आपको नहीं बताया था कि यहाँ पे ऐसे क्यों होता है। एंड आप जो है वो आइल्स करेंगे, यू विल बी सर्टिफाइड एज अ इंग्लिश प्रोफिशिएंट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसे ऐसे क्यों पढ़ते हैं, तो आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या रूल है और इसको ऐसे क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे रूल नंबर 5 है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड इज ऑलवेज साइलेंट। अगर ई जो है वो वर्ड के लास्ट में आएगा, तो उसकी साउंड हमेशा जो है वो शॉर्ट होगी, मतलब होगी नहीं, बिल्कुल साइलेंट होगा। अब वो साइलेंट क्यों जी होगा? लेट्स सी कि when the word end on the consonant plus e, the vowel that comes before the consonant makes a long sound। बहुत इजी है, क्या कह रहे हैं
कि अब ये वर्ड है, आप इसको जरा प्रोनाउंस करें, क्या है? बाइट। एब्सोल्युटली इट्स अ बाइट। अगर यहाँ पे आपने फील किया कि बाइट के साउंड में कहीं पे ई की साउंड है लास्ट तक? नहीं। बाइट सिर्फ टी की है बाइट। ना, ई तक ठीक एंड है। हो रहा है। और अगर चूंकि ई साइलेंट है, लेकिन अगर ई को रिमूव करते हैं, आप यहाँ पे इमेजिन करें सिर्फ BIT लिखा हुआ है, तब कैसे पढ़ेंगे? अगर BIT लिखा है, बिट। वर्ड पढ़ेंगे, उसको शॉर्ट वर्ड कर देंगे, राइट? तो क्या हुआ, ई खुद तो साइलेंट है, लेकिन उसने अपने साथ वाले कॉन्सोनेंट को पावर दी हुई है कि वो उसको लॉन्ग बना दे। बी की पावर की वजह से होने से इसको हम बाइट पढ़ रहे हैं। अगर बी नहीं है तो ये बिट पढ़ा जाएगा। बी खुद साइलेंट हो जाता है, लेकिन साथ वाले कॉन्सोनेंट को पावर दे देता है, प्रिविलेज दे देता है कि वो लॉन्ग हो जाए। जैसे बाइट, माइन, रोप, एप। ठीक है। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनमें ई तो साइलेंट होता है, ई हमेशा साइलेंट होता है। इंग्लिश में कोई भी वर्ड आप उठा लें और लास्ट में अगर ई आ रहा है ना, ई हमेशा साइलेंट होगा। लेकिन ई अपने साथ वाले कॉन्सोनेंट को प्रिविलेज दे देता है, और उसकी वजह से वो लॉन्ग हो जाता है। अगर यहाँ पे ई ना हो तो मैं इसको मिन पढ़ूंगी, अगर रोप पढ़ूंगी या ऐप पढ़ूंगी, लेकिन ये एप है। बाइट तो आपको पता है, बाइट इज द मीन जो कि हम ब्रेक करते हैं, जो इवन टिथ से कट होता है। माइन जो कि मेरा है, रोप इवन द मीन इज रस्सी। एंड एप क्या होते हैं, एप पता है आपको? नहीं, एक मिनट। एप आपने मंकीज तो देखे हैं ना, जो कि बिग साइज में मंकीज होते हैं, जिसको हम उर्दू में गोरिल्ला कहते हैं, या फिर आपने मूवीज या वीडियोस में देखा हो, ये एप होते हैं। इनको इंग्लिश में एप कहते हैं, देखे होंगे आपने। तो ये ये, जो अंदर का। हाँ हाँ, तो ये वही है, ठीक है। तो ये इसको आपने देख लिया, ये तो तो बिल्कुल अच्छा, इसका। इसमें तो मैं हम्म जी, 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 हम्म इसमें तो जो है मतलब कि हम जैसे बाइट है, तो मतलब सी को पावर नहीं दे रहे हम, तो आई को दे रहे हैं, मतलब आई को लेंथ, आई को थोड़ा सा मतलब प्रेस कर रहे हैं, बाइट, हम्म, माइंड, रोक। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम वोवल्स को ही कर रहे हैं, हम तो कॉन्सोनेंट को नहीं खेल रहे, उसके टाइम को थोड़ा सा टच दे हम्म। रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है, इसको आप किसी भी कॉन्सेप्ट से लेके आ सकते हैं, और हर पॉइंट दूसरे से ना मिल रहा है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये शॉर्ट वर्ड है, इसमें जो है वो एक साउंड है, राइट? बट वाइट जो है, अगर यहाँ पे ई नहीं है तब ये बिट होगा, अगर ई है तो ये डबल कॉन्सोनेंट और ये लॉन्ग होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इट्स लास्ट ऑफ टुडे। इसमें जो है ना, ये आपका, अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है ना कि समटाइम्स सी की ना दो साउंड होती हैं, कभी मैं कहती हूँ सी फॉर केक एंड समटाइम्स मैं कहती हूँ सी फॉर सिटी। मतलब एक ही सी है, लेकिन इसके दो साउंड्स हैं। कभी केक के साथ कहते हैं, कभी कहती हूँ सी फॉर कार, उसकी के वाली साउंड आ रही है। लेकिन कभी मैं कहती हूँ सी फॉर साइकिल, तब उसकी एस वाली साउंड आ रही है। सी है एक ही, तो उसकी दो साउंड्स क्यों आती हैं? और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ऐसे एक वर्ड है सीज, तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको कीज, उसमें हालांकि वो एस की साउंड है। तो आज ही आपकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आप कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं करेंगे कि कब एस वाली साउंड आएगी और कब के वाली साउंड आएगी। जब भी आप देखें, व्हेन यू विल सी द ई आई और वाई, ओनली थ्री लेटर्स ई आई और वाई आफ्टर द सी। जब भी सी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए या फिर वाई आ जाए, उसकी साउंड हमेशा एस रहती है। और अगर ये तीनों लेटर्स नहीं आ रहे, कोई और लेटर्स आ रहे हैं, तो हमेशा के की तरह साउंड होगी। जैसे केक है, कार है, ठीक है, कैंडल है। तो वो सारे वो वाले हैं जो कि ई आई और वाई के अलावा है, एक्सेप्ट ऑफ ई आई एंड वाई। बट अगर ई आई एंड वाई आ रहा है तो हमेशा साउंड ऐसे होती है, जैसे कि देखें, सी के बाद आई आ रहा है तो इसको सिटी पढ़ रहे हैं, सी के बाद ई आ रहा है तो सेंचुरी पढ़ रहे हैं, सी के बाद वाई आ रहा है तो साइकिल पढ़ रहे हैं। ठीक है। नहीं, तो नहीं समझ में आया मुझे, रिपीट कर देंगे। हाँ, बस आपने इसको लिख, जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि हमें स्पीकिंग में चाहिए ना, स्पीकिंग में जब आप इसको प्रैक्टिस करें, जब आपने बस माइंड में रखना है इन रूल्स को, बाकी आपकी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है। मैम इसको रिपीट करेंगे थोड़ा, रूल ठीक से मुझे समझ नहीं आई, मतलब इसमें काफी कंफ्यूज है अभी। ओके। तो अगर आपके पास, मैंने बताया कि आपके पास एक लेटर है अल्फाबेट में, वो है सी। ठीक है। और सी लेटर की दो साउंड्स हैं। सी को कभी आप कहते हैं सी फॉर सिटी, एंड कभी आप कहते हैं सी फॉर केक, कहते हैं ना, सी फॉर हम्म, केक भी है, सी फॉर सिटी भी है। तो कभी सी की साउंड केक वाली हो जाती है, के की तरह, और कभी सी की साउंड सिटी वाली हो जाती है, सी की तरह, एस की तरह।
तो कब हमें पता चलेगा कि कब इसको एस की साउंड की तरह पढ़ना है या फिर के की साउंड की तरह पढ़ना है? तो इसके लिए बहुत आसान पॉइंट है कि अगर आपको सी के बाद ये तीन लेटर नजर आए, ई आई और वाई, तो हमेशा आपने इसकी साउंड एस की तरह रखनी है, जैसे सिटी, सेंचुरी, साइकिल। और हम्म, अगर इसके अलावा कोई और लेटर हो, जैसे कि केक में ए आ रहा है, कार में ए आ रहा है, कैंडल में ए आ रहा है, तो हमेशा जितने जो मर्जी लेटर आए, लेकिन ई आई और वाई ना आए, तब उसकी साउंड की तरह रहेगी। लेकिन अगर ये तीन लेटर आएंगे तो एस की तरह रहेगी। ठीक है। ठीक है, समझ। सो लेट मी नो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। जी, आपको क्या समझ आया ये बताएं। मुझे इस मतलब जितने भी रूल्स हैं मैंने इधर नोट तो नहीं करा, मुझे समझ आ गया। मैं स्लाइड को एक बार देखूंगा तो मुझे आगे से जैसे मतलब कि अगर कॉन्फिडेंस आ जाए डबल, और उसके आगे और पीछे वो वोवल साउंड पर उसको बिल्कुल। मतलब प्रेस करना है, मतलब सारा समझ आ गया मुझे। और इसका भी समझ आ गया कि अगर तो सी आई आर वाई आ जाए तो फिर हम मतलब कि एच की तरफ मार्क करेंगे। अगर बिल्कुल। अगर कोई और आ जाए तो फिर हम केक की तरफ केक। Absolutely. ठीक है। एंड सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट हम जो है डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपकी स्पीकिंग की भी। एंड इट्स अबाउट के स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं बोल पाते, क्या रीजंस होती हैं, या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं? तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैम, मेरे साथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये मॉड्यूल होता है आईएलटीएस में, तो इसलिए स्पीकिंग को हमने फर्स्ट में रखा है ताकि हमारे पास पूरे टाइम होगा इसको करने के लिए। इसको लास्ट में या सेंटर में नहीं रखा ताकि हमारे पास कम टाइम हो, तो बिल्कुल स्टार्ट पे रखा है ताकि ये जब तक प्रोफिशिएंट ना हो हमारे कोर्स तक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। सो जी, लेट मी नो अबाउट इट कि आपको क्या लगता है कि स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है, स्टूडेंट्स क्यों लैग करते हैं, क्या उन्हें इश्यूज आते हैं? मैम एक तो ये है कि मतलब बोलते वक्त पता नहीं चलता कि क्या मतलब वर्ड क्या यूज करना। और दूसरी बात ये है कि हम एक तो हिचकिचाते भी हैं, लाइक हम्म। डरते हैं कि कोई गलत ना हो जाए तो करना चाहिए। ये ये रीजन बेस्ट है, और ये रीजन वो रीजन है जो हम सब ये कहते हैं कि अच्छा अब कौन सी प्रपोजिशन आनी थी, एन लगाना है, ऑन लगाना है, एट लगाना है, या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो नहीं रॉन्ग हो गई, या हम बोलेंगे तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा। ये सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से हम स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। आपके कोर्स की एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपको मैंने फर्स्ट डे से स्पीकिंग करवानी है, और विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि आपने सही बोलना है। मैंने जस्ट आपसे कहना है कि आपने सिर्फ बोलना है। नोट करिए अबाउट के ग्रामर रॉन्ग हो रही है या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब रॉन्ग हो रही है, जो मर्जी रॉन्ग हो रहा है, यू जस्ट हैव टू बी मेक अ हैबिट टू बी स्पीक इन इंग्लिश। एंड जब जब आप साथ साथ, क्योंकि ग्रामर पढ़ रहे होंगे, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, आप टेंसेस पढ़ेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली जब हैबिट बनी हुई होगी ना एक फ्लो में इंग्लिश बोलने की, तो आप अपनी मिस्टेक्स को साथ साथ बिल्कुल अलाइन करते जाएंगे और ठीक करते जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं पूरी ग्रामर सीख लूं और उसके बाद मैं अप्लाई करूं, तो वो सारी ग्रामर को एक साथ अप्लाई करना मुश्किल होता है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट स्पीकिंग में लैग करते हैं। ठीक है। सो दैट इज द वेरी वेरी important reason. So that is why students makes the make feel uncomfortable to be speak English. They think के अच्छा फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगे, इसमें preposition क्या आएगी, नाउन कौन सा यूज होगा, प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, तो वो इतनी सारी चीजें एक साथ लेके आते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। आपने स्पीकिंग की हैबिट अपनी आज से बनानी है, और जो जो आप साथ साथ सीखते जाएं, जैसे आपने रूल सीख लिया तो रूल्स को करेक्ट कर लिया, फॉर्म ऑफ वर्ब सीख लिया, फॉर्म ऑफ वर्ब को करेक्ट कर लिया, उसमें आपने जो है कुछ एडवांस वोकैबुलरी जैसे हम ऐड करते जाते हैं, इसी तरह से आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते जाते हैं साथ साथ, नॉट अबाउट कि एक साथ। ठीक है। ऐसा आप जो ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने भी ये देखा होगा कि जब हम कुछ भी सीखते होते हैं, कोई लैंग्वेज सीखते हैं, हम कहते हैं कि बस प्रैक्टिस तो करें, थोड़ा सा भी किया उसकी प्रैक्टिस तो करें। यानी आप सीखेंगे नहीं मैं पूरी फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज सीख लूँ, उसके बाद जो है मुझे वेरिएबल्स का भी पता चल जाए, अरे का भी पता चल जाए, लूप का भी पता चल जाए, और सारी चीजें एक ही बात प्रोग्राम में लगाऊंगा, तो वो हो सकता है? कभी भी नहीं हो। ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं एक ही प्रोग्राम बनाऊंगा और उसमें ये सारी चीजें ऐड करूंगा, और अब पहले मैं थ्योरेटिकल पढ़ लेता हूँ, तो ये कभी भी नहीं होगा। कभी होगा ये? नहीं जी, होगा। तो इस तरह से इंग्लिश भी कभी भी नहीं होती है कि हम सब चीजें एक बार सीख के अप्लाई करना स्टार्ट करें।
तो साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और साथ साथ मैंने आगे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवानी है टू मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश. सो यू हैव टू बी, डोंट वरी अबाउट इट कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा. यू जस्ट हैव टू बी स्टार्ट स्पीकिंग. ओके, सो ठीक। लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हेयर इज, इस बुकलेट में आपको लास्ट में कुछ मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे. ठीक है. सो फर्स्ट लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ. सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हमजा. My name is Hamza, and I am recently graduate from Namal Islamabad campus, and right now I am doing full stack. I'm finding job for full stack engineer, software engineer, um, or someone else. ओके. सो यू नो व्हाट, दैट इंट्रोडक्शन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने उसमें क्या बताना होता अपना नाम बताना है और बैकग्राउंड बताना है, लाइक अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो इधर तो यही बताना कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं है? किस रोल के लिए अप्लाई किया है, गोल्स आप के लोगों बारे को में बात. मेरे। जी जी। एंड अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछ रहा है तो आप क्या बताते हैं? अपने गोल्स बताते हैं, आप करंटली क्या कर रहे हैं, अपनी हॉबीज बताते हैं. इन फ्री टाइम, इन माय लेजर टाइम आई यूज्ड टू बी डू दिस थिंग्स, राइट? So we have to be talk about this all things about here, and that is you usually do in your routine work. Okay, जिसके आंसर्स आपको पता होंगे, जिसका आपने सारी जो एक्साइटमेंट है वो यू नो ऑल अबाउट इट. बट नाउ जस्ट आपने लैंग्वेज चेंज करनी है. Okay, so let's get started. So here is the first question is about what are your strengths and weaknesses. So what do you think about it? Just start speaking and don't worry about it. So what I'm gonna be think, and just let them go all the things. Just start speaking. And and one of the biggest mistake that student used to do, that they think in Urdu and try to convert in English and then speak. तो उससे वो लॉन्ग पॉजेज आते हैं और उससे आप फ्लुएंट नहीं बनते. Just try to think in English and just be fluent, and whatever just comes in your mind, and just try to be speak. Yeah. What are your strength and weaknesses? My strengths are like uh, whatever I'm doing, I put all effort and like I do attention to detail whatever I make the project and uh, solving problem. I deep into it and find uh, find the best solution. And the business are like uh, I um, Mm-hmm. Just be confident, and if you are think that मैंने कहीं mistake की है, तो आपने अपने confidence से नहीं जाहिर होने देना कि आपने कोई mistake की है. Okay, the so be confident and be motivated. So yeah, please going on. weakness are like uh, क्या बताने का बता नहीं सकता. Weakness are हम्म. तो मुझे आपकी आवाज़ procrastination. Yes. क्लियर, मुझे आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही है. सो कैन यू रिपीट अगेन? Okay. My strength are whatever I'm doing, like building projects or solving some problems. I put all efforts, 100% efforts, uh, myself, and uh, going to attention to detail. And weakness are like procrastination. Sometimes I procrastinate my work, and sometimes Mm-hmm. laziness is my weakness. Yes. All right. Okay, so it's a very good answer, you know. And let me give you the one tip. The tip is that so never ever tell anybody about your weakness. Whatever it is or her about your brother or sister or your friend or your most best friend, you never ever tell anyone about your weakness, because it's the thing that if you are in an interview and if you're talking about anyone, so how will you answer this question, right? So because that is the person that really really belongs, that is the thing.
that normally used to be asked in our interviews, right? So how will, so if we have not clear about our weakness, so what we have to answer in that question? So if I'm talking about, in my opinion, about my strength and weaknesses, my strength is about that I'm so believe and so confident in myself. This is my strength, that that is the thing I have to do always. I think about it, that I am so confident and I will do it. So this is my strength. And if I'm talking about the weakness, my weakness is that when I start any task or at any work, so still, if the project is pending, so even I'm not worry about that I had a lunch or a dinner, so I just be depth in my project, and after project that I will be do all the thing. And I think this is my weakness. I should be not be compromised on my health. I should be balance my health vs my work. So this is my weakness. So when the my recruiter will hear my this answer, so वो कहेगा कितनी ज्यादा पंचुअल भी हैं, और उसके अलावा अपने प्रोजेक्ट को लेके कितना ऑनेस्ट है, कि जब तक इनका काम नहीं होता है ये तो बेस्ट रहेंगे हमारी कंपनी में, राइट? तो आपने अपनी जी, वीकनेस भी ऐसे बतानी है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं अपने बॉस को कहूँ कि मैं मेरी वीकनेस ये है कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन करती हूँ और मैं प्रोजेक्ट्स टाइम पे नहीं करती, तो वो मेरा प्रोजेक्ट मेरा इंटरव्यू तो फेल हो गया, ठीक है? तो नेवर एवर टेल एनीबॉडी अबाउट योर वीकनेस। जी, So let's come to this. Question is जी, about how do you define success? Because you know what, that IELTS is a different speaking criteria, and now we are not going to be about this. We are just here to be improve over English. जब आपको इंग्लिश आती होगी आप क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लेंगे। अभी जस्ट आपको इंग्लिश बोलनी है, दैट्स इट। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? okay. सो I इन योर think ओपिनियन व्हाट इज success सक्सेस? is like, okay, I think that success is like mm, succeed in uh, um, find the purpose and purpose of life and succeed in it. Like why we are here, uh, like succeed in and going to Jannah. All And right, that is a very yeah, exceptional answer. It's very important. And yeah, if I'm talking about the success, is a success have a different angles, and it depends on person to person. And if I'm talking about that, I wake up early in the morning, and I always used to tell myself that that is one another opportunity to me, that I can improve my profile, I can improve myself. That is it's not a long to be just consist of my resume. It's also about the status of my prayer, that I uh, I'm talking about, that I will be you can say, is about the thing that I'm listing, that I will pray the 5 times in a day. So this is the success, I think so. That if you are achieving your goals, not about the big goals, achieving your goals, it would be short but in consistency, so this is a success. So achieving the goals, it's not about it big and short, but if you are satisfied by yourself, this is success. That if you've done all the tasks that you write on the beginning of the day, that I will do it all the tasks, and you're done, this is success. And that is the thing that makes yours to make you and yourself the boost, and that will come from in your side. So that will not gonna be give you anyone in the world. So that confidence, that boost comes from yourself, that I can do it and I do all the things. When you mark the checklist, and when you mark the tick point in all about the list that you mark, so that is success, that you're done with your own. Okay, so let's come to the next, is about but how you manage your sorry, मैं इस time. पे थोड़ा सा वो करूँगा कि Yeah, yeah. समटाइम ये होता है कि इंसान जितनी मर्जी एफर्ट कर ले और वो उस चीज़ में कामयाब नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये है कि अपनी एफर्ट जो काम को करने के लिए अगर वो कर लिए, तो मेरे ख्याल में वो उसमें कामयाब है।
रिजल्ट जो Hmm. हैं वो आपको कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। Okay, try to be explain me in English. All these. Okay. ये भी Yeah, करने just की try है। it. Just try it. Again, tell me all about it that you say after my answer. So please tell me again in English. Try to be, just try. I didn't give you any kind of restriction that you have to be give me the correct answer. No, just you have to tell me in English. I think whatever we are do we are doing some work, we will put all effort on it, whether we yourself achieve or not, but we do we do 100% of ourselves on it, and this is success. Hmm. Absolutely. Yes, So yeah, it's absolutely thing that I can say that you're true, and I truly agree with you. And if I'm talking about the managing your time, that now is after we become the graduate, the you can say the timings, managing the time and the managing routine become more complex. If you are not doing anything but the burden on yourself that how to manage the task and these all things, because from the past 4 years we are in a same routine, the assignments, the quizzes, and to have to submit yes, it, and the classes, just all about it. But after the 4 years, a long period where all routine just changed. So how do you manage your time being a student to take your classes and do your home chores? And you know what, that now is a summers, is a holiday. So even my also family member used to tell me every time that now is a holidays, why you always locking with your laptop, what you are doing right now, and now let's see the time. Every time they are giving me the lectures, anybody anytime. But now we all are know that what we are doing, and we can't explain to them till that if our goals are not completing, because we are on a procedure, right? So how we are going to be explaining them? Everyone just call me that now is the holidays, so let's do my this work. So my mother used to tell me that now is a holiday, just spend your time in kitchen, and you have to make the dinner of all the day. Yeah. And in my yesterday, she told me about it that it's all about the holidays, about the 2.5 months. So you have to make the dinner daily. So okay, I accept the challenge, and I said, okay, mommy, all right, I will make it. All right. So before to be take your class, I just done my all sorts of the kitchen, and then I come back to the laptop. Yeah. So this is the routine. So how you are going to manage it? I say to my mommy all the time, yeah, I can do it. Whatever you say, I can do it, but can't be stopped to me to with my laptop. That I have to do it. So yeah, so every time my father used to tell me that you are still on a laptop, just lay down. You should need a rest. Every time you are just logging with your laptop, so yes, everyone just give you suggestions, and you give you the task that you have to do. But always we have that kind of nature that yeah, I can do it, this, and always I have that nature. Okay, I will do it. I can do a rest, everything, but can't stop me with my laptop. So that is the same situation with you, right? So everyone just give you, now you are a graduate, so do this thing. अब घर पे हो तो ये काम करो, कुछ घर के काम भी कर लिया करो. So how do you manage everything? We have a so a burdenized routine, right now. So how do you yes. manage it? It's very difficult to manage after graduation because uh, when we are studying during the degree, uh, it is very easy to manage, like go to university and after doing assignments, etc. But after graduation, it is very difficult to manage. But I try to my best. I, I read Atomic Habit to make how to consistent uh, uh, in this, like uh, in how to manage time. Then I I started like timetable in Excel sheet, Google Excel sheet, and just make checklist. If that four tasks and done to three, yes.
it is it is best for you. Yeah. Okay, yeah, it's a what that it's difficult, but we have to be manage the time in any kind of case. And Yes, if in my opinion that when I just set my mind that now is the time to sleep, so I just open my phone and give the voice note to myself that what the things I have to do on morning. So when I just wake up and I listen that voice note to me that I have to do this thing, and also have to be in my list also to cooking the dinner as well. So yes, yeah, all the things in my list that I have to do it and how to manage. And I am the person that used to done the things on a 11th o'clock. You know what, that 11th hour I have to do it. So in my routine on the last week is to be teach hours on a 10 p.m. right. So before doing this, before just a 1 hour, I create the slides to be teach to you. Yeah. So this is all about the routine that how we are going to manage it. So the long tasks that we used to do it on the beginning of the day, and after the middle, the it's all about that how we are going to manage. So let's come to the next. What is your morning routine like? So how do you define it? one thing is uh, very day to day. Sometimes I get up early in the morning, and sometimes I sleep in the morning and wake up at 12 p.m. or 1 p.m. And yes, if I get up early in the morning, I read book Quran. I play in the night further, and if I get up 12 p.m. I just, just Okay, so it's all right, and everyone have a different routine, and yeah, along with me, that it's a routine that I wake up. I try to be used to wake up early in the morning, and when I just being late, it's about the 8 or 9 a.m. So I being so guilty that I just lost my hour. So I should be early, wake up early that morning. Yeah, when I wake up and try to be do the ablution and try to be offer my prayer, and after the recitation I used to just take my breakfast. And that is the thing I used to do because I am at home and off from the university, so I have the duty to be clean up as well. So nowadays I used to be cleaning as well of the house. Yeah, and after that then I just open my laptop and doing the pending task. All right. So next come to is a question is about, do you prefer working in morning or night? I guess I prefer working at night because Night. we have no harder at night. It has no time and nobody can and Absolutely. do And work like okay. So that. as far as my concern, that I prefer to be done all the tasks at night because when it's very calm and everyone just is to be on the sleep time. And when I wake from the sleep, then I feel so not about that energetic, right? So some of the people when they wake up, they feel so energetic. But when I wake up from the sleep, I not feel energetic and I feeling to be some sleepy and just do the thought. Still, so how do you organize your day? Um, Usually I don't organize. I know what I do daily tasks, daily to daily tasks. Mm, I make sure and once at a time and just follow these like doing some DSA and preparing interview and uh, applying for jobs and learn new skills like right now I am doing my first project and personal project like that mhm. and anything like I read books um, and at this moment I take English art class
I'm not added into list. All right. So yeah, from our the for the first of the week we will try to be cover the fundamentals of English, right? The basics, the grammar, and tomorrow we will learn the parts of speech that are very very important. You can say this is a pillar of English, like to be knowing about the noun, pronoun, its conjunction, adjective, preposition, and all about it we will talk about tomorrow. And you have a task to be get idea about to be learn the 10 IELTS vocabulary words. Okay, एंड यू कैन चूज फ्रॉम दिस बुकलेट एज वेल. यहाँ पर आपको लेक्सिकल रिसोर्स मतलब विकेबलरी भी मिल जाएगी और सिनोनियम्स भी मिल जाएंगे इंग्लिश में जो कि इस बुकलेट के लास्ट में मिलेंगे. ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी चूज द 10 वर्ड्स ऑफ द डे and try to be use these words in your conversation, daily conversation, whatever you are calling to someone, wherever you are texting or dropping your voice note to each other. And if you are for example, if I am giving you the one topic from this, so you can choose any topic from your conversational. Okay, and try to be use these words. You have to be learn the 10 words of the day. Okay, so Okay. I will listen from you the new words, and that is the word that you use in your conversation. And tomorrow we will discuss the next topic of the pronunciation. All right, and you have to be use these words there, some lexical resources. And tomorrow we will learn about the uh, parts of speech. And I have give you the homework. Your homework is about is education. Okay, you have to be try and practice about the education, the 3 points, the 3 questions are there. And try to be speak whatever you have the stuff like long and short question, and use this word that you learned from the IELTS vocabulary. And the thing is that is just stand in front of a mirror and ask a question from yourself and just start your answering. Okay, so the mirror is a very incredible practice that I have ever given to anyone. It's very incredible when you saw yourself in a, you know what, that every, especially we are that age, we love to see ourselves in a mirror, right? Everyone just setting their hairs and everyone just standing in front of a mirror, and especially the girls, they love to spend time in front of a mirror. And just you have to be standing in front of a mirror and talk to yourself. And just ask a question from yourself and answering, and then you saw yourself in a mirror to be how you pronounce and how you're answering, what's your expression, what's about your body expression, how your hands are moving, how your expression of the face, your facial expression, everything you will see in the mirror, right? So this is your practice that you have to be do it. All Okay. right. Okay. Just one to three questions. What if I uh, speak with like Gemini or ChatGPT? Yeah, Uh, you can sure, yeah, you can or use the whatever you want LLM. You can use it, you can use the chat gpt to be फाइंड करने के लिए भी, अगर आपने वर्ड्स फाइंड करने हैं वहां से ले सकते हैं, या फिर कोई भी स्पीकिंग टूल यूज कर सकते हैं. यू हैव टू स्पीक. ओके. or ma'am, what is my English level like? अच्छा, Very अभी good. आपने ना, अभी आपने इंग्लिश, अभी आयल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल्स के मॉक टेस्ट नहीं आपने लेने के, आप उसमें प्रैक्टिस करें और आपको पता चले अभी आपके 4 बैंड्स आए हैं, 5 बैंड्स आए हैं, तो उससे ना एक प्रेशर बिल्ड होता है कि अच्छा अभी 5 आए हैं, 6 कब आएंगे या 7 कब आएंगे. अभी आपने फ्लॉलेस होके इंग्लिश बोलनी है, चाहे वो रॉन्ग है चाहे वो सही है. अभी जस्ट आपने हैबिट बिल्ड करनी है. ठीक है, जिसमें आपको बताया कि एक ही बार आप सारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में अपने माइंड में रख के वो करेक्ट परफेक्ट नहीं बोल सकते. वो आप